नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. प्रजासेवा भवन येथे भव्य विजयदशमी सोहळा, शस्त्रोक्त पद्धतीने वाहन आणि शस्त्रांची पूजा. पोलीस मुख्यालयात दसरा उत्सव, एसपी उदयकुमार रेड्डी यांनी शस्त्रांची पूजा. मोठ्या थाटात देवी यांची शोभायात्रा विसर्जन समारंभ, भक्तिमय प्रयत्नातून देवीची आराधना करणारे भक्त. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी विजयदशमीच्या निमित्ताने सर्व लोक सुखी व्हावेत, आनंदाने भरभराटीस राहावे आणि आपले ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने पावले टाकत असलेल्या सर्वांना यश मिळो अशा शुभेच्छा दिल्या. आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन शिबिर कार्यालयात विजयदशमी उत्साहात साजरी करण्यात आली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि त्यांची पत्नी साई मोहना रेड्डी यांनी दसरा सणाच्या स्मरणार्थ शस्त्र आणि वाहन पूजन केले. नंतर प्रजासेवा भवनाच्या प्रांगणात जगाच्या कल्याणासाठी आयोजित केलेल्या विशेष पूजादी कार्यक्रमात सहभाग घेतला. प्रसिद्ध वैदिक अभ्यासक फणातुला प्रवीण शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या पूजेत त्यांनी बसून समाधानकारक प्रार्थना केली. सर्व जनतेला सुखी समृद्धी लाभो आणि ईश्वर सर्वांना आरोग्य संपत्ती देवो अशी प्रार्थना करण्यात आली. नियोजित उद्दिष्ट साध्य करून विजयदशमीच्या किनाऱ्यावर पोहोचावे यासाठी त्यांनी मतदारसंघातील सर्व जनतेला शुभेच्छा दिल्या. ओम युवं वस्त्राणि पेवसावसाधे युभोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लम्बो सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुं हसः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः मस्तकवन्दनपायारति तुज अम्बे लोकत्रयचन्दू. पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा राहिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला. यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे. देवो बृहस्पतिः बृहस्पति प्रसूत ओम तस्मै मन्योविते धरणं मध्यो ओम या फलनेर्या फला पुष्पाया च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुं या फलनेर्या फला पुष्पाया च पुष्पिणीः मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु. व्रतादन्ते अग्नेः ओम ए भूता प्रचरन्ति दिवानक्तं वलिमिच्छन् देवी तिस्रो देवी अतिन्द्रमवर्त मुञ्चन्त्वगुं ओम फलापुष्पाय अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु. बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्ति धादाति मासां प्रतिष्ठित्वा उपरिष्ठान् मासां पृष्ठान् निवयन्तु तस्मा. పల్లెటూరులో చాలా పెద్ద విషయం. समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वर्णस्य मन्युभ्यं ददाना हृदयेषु पुष्पिणीः गृहासिमासि पृष्ठान् निपयन्ति मासिमाः आस्यति मन्मे कामवस्त्रादिके.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक उदयकुमार रेड्डी म्हणाले की विजयदशमी संपूर्ण जिल्ह्यात शांततापूर्ण वातावरणात साजरी करावी। सकाळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलीस मुख्यालयातील आयुडी भंडार येथे वैदिक विद्वानांनी वैदिक मंत्र उच्चारात पारंपरिक आणि विद्वतापूर्ण पद्धतीने दुर्गा देवीच्या उपस्थितीत विशेष पूजा केली। त्यानंतर क्षमीच्या झाडाची पूजा करण्यात आली आणि विजयदशमीच्या हवे सोहळ्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या। नंतर सशस्त्र पोलीस विभाग व शाणा पथक, बॉम्ब शोधक पथक, पोलीस वाहने आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांसह पूजा कार्यक्रमात सहभागी झाले। जनतेने विजयदशमी सण मोठ्या उत्सवात साजरा करावा आणि जिल्ह्यात शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलीस विभाग अथक परिश्रम घेत असल्याचे एसपी उदयकुमार रेड्डी हे म्हणाले। ते म्हणाले की दुर्गा देवी विसर्जन मिरवणूक मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला। गोविंदाय नमः विष्णवे नमः 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 जनार्दनाय नमो वैन्द्राय नमः हरे ज्योतिष्प्रदं दासादयामि भास्वरं ज्योतिष्यां प्रसरव्ययां कलशं विच्छेदमेण्डि करान् समर्पयामि पादयोः पादं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि यादौ प्रभृते प्रसन्नवदने समे कामान् अर्चम शत्रूणां च पराजयं आर्यराजा महाराजा वनराजा वनस्पति इष्टदर्शनम् इष्टान्नं शत्रूणां च पराजयं। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు అందరూ ఫ్యామిలీస్ తోటి పిల్లలతోటి దసరాని చాలా ఘనంగా జరుపుకోవాలని, శాంతియుతంగా ఉండాలని, ఈ సంవత్సరం అందరికీ విజయం సాధించాలని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ రంగంలో మంచిగా పేరు తెచ్చుకొని విజయం సాధించాలని నేను మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, ఆదిలాబాద్ జిల్లా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నేను వాళ్ళందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। వాళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। आदिलाबाद शहरातील कैलासनगर कॉलनी आणि पद्मनायक गार्डन्स येथे आयोजित करण्यात आलेला सद्दुला बतकम्मा सोहळा शुभ आहे। काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि त्यांच्या पत्नी साई मोना रेड्डी या बतकम्मा सोहळ्यात सहभागी झाले। त्यांनी गौरम्माची विशेष पूजा केली आणि महिलांसोबत खेळ खेळला। त्यानंतर विद्यानगर, तिरपेली, ताटीगुडा, भाग्यनगर, शांतीनगर, श्रीराम कॉलनी, इंद्रम्मा कॉलनी आणि रामनगर कॉलनी येथील दुर्गा देवी आणि शारदा देवीच्या मंडपांना भेट देऊन देवीची विशेष पूजा करण्यात आली। त्यांनी देवी यांना सर्व लोकांना आरोग्य आणि समृद्धी द्यावी अशी प्रार्थना केली। तसेच चौडेश्वरी माता मंदिरात जाऊन देवी यांचे दर्शन घेतले। काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते आणि वसाहतीवाल्यांसोबत ते सहभागी होते। వచ్చినందుకు శ్రీ పెద్దమ్మ వెనుకుండు గోంచం వెనుకుండు दुर्गा माता
में क्या पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस गगनाला भिडत असताना इलेक्ट्रिक वाहनाची मागणी वाढत आहे। पर्यावरणाची हानी न करता आणि पेट्रोलच्या दराची चिंता न करता उपलब्ध झालेली इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास लोक उत्सुकता आहे। अमेरिकेतील आघाडीचे वाहन उत्पादक कंपनी टेस्लाने या बाइक्स बाजारात आणले आहे। 2 तेलुगू राज्यातील पहिला शोरूम आदिलाबादमध्ये स्थापन करण्यात आला। सोमवारी या शोरूमचे उद्घाटन करण्यात आले। मुडुपू भूमरेड्डी, लोकभूमरेड्डी आणि एल.टी. लिंगारेड्डी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। वैदिक विद्वानाच्या मंत्रोच्चारात दीप प्रज्वलन करून पूजा करण्यात आली। तेलंगणा मास्टर डिस्ट्रीब्युटर भास्कर आणि प्रादेशिक विक्री व्यवस्थापक अब्दुल करीम यांनी इलेक्ट्रिक बाइकचा वापर आणि त्यांचे फायदे स्पष्ट केले। आदिलाबादमध्ये एपी आणि तेलंगणा राज्यातील पहिले शोरूम सुरू झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। టెస్లా పవర్ యూఎస్ఏ ఒక అమెరికన్ కంపెనీ అండి। వీళ్ళు ఇండియాలో ఒక 1.5 ఇయర్ బ్యాక్ లాంచ్ చేశారండి। రీసెంట్గా వచ్చేసి ఈ వెహికల్స్ కూడా లాంచ్ చేశారు, 2 వీలర్ అండ్ 3 వీలర్లో। ఏపీ తెలంగాణలో ఫస్ట్ షోరూమ్ ఆదిలాబాద్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి। దీన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నామండి। ఈ బళ్ళులో వచ్చేసి ఒక ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఒక టెక్నాలజీతో లాంచ్ చేసామండి। బ్యాటరీస్, సోలార్ అన్ని రకాల బ్యాటరీస్ ఉన్నాయండి। 2 వీలర్ బ్యాటరీస్, ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీస్, కార్ బ్యాటరీస్, ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి, హయ్యర్ కెపాసిటీ ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎస్ఎంఎఫ్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి, సోలార్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయండి। వీకెండ్స్లోకి టైర్స్లోకి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి। జనరల్గా మీరు చూస్తూనే ఉంటుంటారు, ఈ మధ్యకాలంలో బ్యాటరీ బళ్ళు కారిపోవడం, పేలిపోవడం జరుగుతున్నాయి। అలాంటివి ఏవి జరగకుండా దీంట్లో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఈ బళ్ళన్నీ తయారు చేయడం జరిగిందండి। ఎవరు కూడా భయాందోళన చెందకుండా ఈ వెహికల్స్ వాడుకోవచ్చు। 9 दिवस पूजलेल्या दुर्गादेवी आणि शारदादेवी यांना हार घालून विशेष गंगाच्या मांडीवर बसून विसर्जन करण्यात आले। मिरवणूक म्हणून घेऊन विसर्जन केले। शहरातील अनेक मंडपांमध्ये सकाळी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली। त्यानंतर विशेष पूजन करण्यात आले आणि सुंदर सजवलेल्या वाहनांमध्ये देवी मूर्ती ही विसर्जन करण्यात आले। वाटेत महिला भाविक पारंपरिक कपडे परिधान केले आणि भक्ती गीताने ती कीर्तनांमध्ये देवीच्या कृपेत तग्न झाले आणि नृत्य करत ते निघून गेले। त्यामुळे शहरातील रस्ते आध्यात्मिक सौंदर्याने भरून गेले। भक्तीचा वर्षाव होत आहे। जय माता दी, जय माता दी या घोषणेने शहरातील रस्ते दुमदुमून गेले।
संपूर्ण जिल्ह्यात बతుकम्मा उत्सव मोठ्या थाटात सुरू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील कोलीपुरा येथे झालेल्या बతుकम्मा सोहळ्यात वसाहतीतील महिला आणि युवतींनी उत्साहाने सहभाग घेतला। बతుकम्मा मध्यभागी वेगवेगळ्या फुलांनी सजवून त्यांनी मांडणी करून गौरम्माची विशेष पूजा केली। त्यानंतर त्यांनी बతుकम्मा गाण्यावर नृत्य केले। त्यामुळे वसाहतीच्या आवारात हे गजबजलेले गेले होते। तेलंगणाची संस्कृती आणि परंपरा दर्शवणारा या बతుकम्मा उत्सवाचे वेगळेपण दाखवून दिले। उत्सव भव्य पद्धतीने आयोजित करण्यात आले। अनाथ म्हणून येत असलेल्या या बతుकम्मा सणाचा वारसा आताच्या पिढीला कळावा या उद्देशाने अनेक जण आनंद व्यक्त करत आहेत। काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली। केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नियमितपणे अन्नदान चालू केले। आजपर्यंत असे अन्नदान कोणीही केले नाही। शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे, त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे। ఒక సైనికుడై మనకై ఒక సేవకుడై మనలో మన నాయకుడై కదిలే జనశ్రామికుడై అడుగడుగున అభివృద్ధిని చేసే ఆశా దీపకుడై వస్తున్నాడనిగో సీనన్న వస్తున్నాడనిగో వస్తున్నాడనిగో మన కోసం వస్తున్నాడనిగో వస్తున్నాడనిగో సీనన్న వస్తున్నాడనిగో వస్తున్నాడనిగో మన కోసం వస్తున్నాడనిగో జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు మార్పుతోనే మన బతుకంటూ అన్ని అండగా మారాడు పేదల కష్టం తీర్చేవాడు। जैनात मंडळातील मांडावाडा गावात 9 दिवस पूजल्या जाणाऱ्या दुर्गादेवीचे विसर्जन करण्यात आले आणि यात बायांनी टिपऱ्या नाचत नृत्य केले व देवीचे भक्त यांनी पूजा केली। त्यामुळे मांडावाडा गावात सगळीकडे भक्तीचे वातावरण होते।
कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस प्रदेश नेते आदिलाबाद शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमधून ताफ्यासह रॅली काढली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रचार रथाच्या वरच्या भागातून लोकांना अभिवादन करत पुढे निघाले। कलेक्टर चौक, NTR चौक, बस स्टँड, पंजाब चौक, आंबेडकर चौक, शिवाजी चौक, गांधी चौक, नेताजी चौक, बुक्तापूर मार्गे रॅली परत कॅम्प ऑफिसवर आली। या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाचे अनेक नेते आणि चाहते सहभागी झाले होते। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवन येथे भव्य विजयदशमी सोहळा, शस्त्रोक्त पद्धतीने वाहन आणि शस्त्रांची पूजा। पोलीस मुख्यालयात दसरा उत्सव, SP उदयकुमार रेड्डी यांनी शस्त्रांची पूजा। मोठ्या थाटात देवी यांची शोभायात्रा विसर्जन समारंभ, भक्तिमय प्रयत्नातून देवीची आराधना करणारे भक्त। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।